Well, our top story is from the state of West Bengal, where there is hectic campaigning underway because today is the last day of campaigning, and the who's who of the Bharatiya Janata Party, including Mithun Chakravarti, who's just joined the party, were campaigning in Bengal today. An all-out rally war was witnessed in Mamta's turf. BJP bigwigs Amit Shah, Rajnath Singh, Yogi Adityanath, and like I mentioned, Mithun Chakravarti also aggressively campaigned before the Phase 1 polls. Union Minister Amit Shah launched a scathing attack at Mamta, accusing her government of running 115 scams as compared to the Prime Minister Modi's 115 development schemes. On the other hand, UP Chief Minister Yogi Adityanath addressed a rally in Nandigram moments ago, attacking the Bengal Chief Minister over the Jai Shri Ram pitch. Mamta too addressed rallies in South 24 Parganas, where she responded to Prime Minister Modi. गुरुदेव की धरती से उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। এই নির্বাচনটা দিল্লির নয়, বাংলার বাইরের কিছু গুন্ডা নিয়ে এসেছে, বহিরাগত গুন্ডা। কপালে একটা করে তিলক কাটছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে। এখানকার উত্তরপ্রদেশের লোকেদের আমি বহিরাগত বলি না, যারা বাংলাকে, কিন্তু এরা বাইরের গুন্ডা দিল্লির। পুলিশ ভয়ে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, মেয়েরা বেরোতে পারে না সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। 10 वर्षों में ममता दीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बहनों भाइयों, न तो यहाँ पर मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात यहाँ पर पैदा हो गए। सर्वत्र के हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। जो बंगाल की धरती एक सांस्कृतिक धरती मानी जाती थी, आध्यात्मिक धरती मानी जाती थी और सांस्कृतिक संदेश पूरे भारत को इस धरती से जाया करता था, आज उस धरती की हालत तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कैसी बना दी है, मुझे बेहतर आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। आप यही बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के लिए सर? Yes, I'm confident. I'm confident, but. All right, let's take a look at why Bengal really matters in these elections this time around. If the BJP wins, it gives the BJP its biggest state prize since the year 2017. It's going to demoralize anti-BJP opposition even further. Will mean that BJP dominates beyond the Hindi heartland in the country. Well, if Mamta Banerjee wins, she becomes a national figure. The TMC win could lead to the revival of the third front, the much talked about third front. BJP win may push India closer to one-party nation.
All right, Mamata Banerjee today reacted to BJP Bengal chief Dilip Ghosh's Bermuda shorts jibe. Mamata Banerjee said that BJP leaders cannot dictate what women should wear. During a campaign in Purulia on Tuesday, Dilip Ghosh had said that the chief minister should ditch the sari and wear Bermuda shorts to clear the air over her injuries. Listen in to this war of words. প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ক্রেপ ব্যান্ডেজ মারা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। সালোয়ার কামিজ পরবে না, শাড়ি পরবে না, ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে। ওদের বলুন যাও, অনেক হয়েছে, কে কি পরবে না পরবে এটা নিজস্ব চয়েস। All right, the TMC is undoubtedly has found an opportunity in sparring with the BJP on this rather sexist comment. But Dilip Ghosh has a defense. Let's listen in. মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা। আমরা তার কাছ থেকে এরকম সাইলেন্টতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা সাইলেন্টতায় নয়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। All right, so there is polarization on the ground as well, and we're getting you a detailed report on that because it was a rather controversial comment that was made by a TMC leader while campaigning. He spoke about the fact that if the Muslims of Bengal come together, then they can form 4 Pakistans, is what he went on to say. TMC Neta Sheikh Alam stoked a massive controversy after claiming if 30% of Muslims in fact come together, they will be forming Pakistan. 4 Pakistan is what he said. My colleague Indrajit Kundu has more details on that story. All-out war that has erupted over Hindu deities here in West Bengal ahead of the first phase of elections. While Mamata Banerjee, of course, has hit back at the BJP over the Jai Shri Ram chant with her new Shiv Bhakt avatar that we've seen in Nandigram. Prime Minister Narendra Modi, during his campaign speech, has also hit back in a sense against Mamata Banerjee, saying that she is only abusing Ram Bhakts in the state. So it clearly shows that the entire first phase, the discourse is over Hindu deities, and anytime soon it's not going to die down. Take a look at this report. वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथी रहे, सखा रहे हैं। दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है। तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बंगाल की जनता आप देखिए, इतने छोटे हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। As Bengal finally gears up for a searing political summer, the deity war is only increasing day by day. From Ram Bhakti to Shiv Bhakti, the Dharma Yudh is set to dominate the battleground of Bengal. दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों, कोई नहीं। From Home Minister Amit Shah promising voters freedom to worship Durga. जय श्री राम, जय श्री राम, To UP Chief Minister Yogi Adityanath. The saffron bandwagon is leaving no stone unturned to paint Mamata as anti-Hindu. This after the Bengal Chief Minister's thunderous Chandi Path and Shiv Bhakti in Battle Royale Nandigram on the 10th of March. Didi went all out with her Hindu credentials, taking the Bengal deity war with the BJP to the next level. Be it chanting mantras on stage or visiting Shiv and Durga mandirs.
Mamta is flaunting her Hindu credentials without any hesitation. আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা On the other hand, Shubhendu Adhikari too visited temples before filing his nomination, adding Lord Hanuman to the ever-increasing list of deities, mocking Mamta over her new Hindutva avatar. চটকে পিন্ডি চটকে দিচ্ছে বলছে সরস্বতী পুজো কুচো যুগ ভূষিত শুনেছেন কখনো বাপের কালে আর কাল তো চণ্ডীকে যা করেছে বাবা মা চণ্ডীকে ভগবান রক্ষা করো In the run-up to polls, the battle for Bengal is more than a clash of personalities. It's become a race for who is more Hindu. Whether the temple runs and mantras guarantee votes will only be known on the 2nd of May. Bureau Report, India Today. All right, shifting focus to Kerala now, where an issue, the attack on nuns from Kerala in Jhansi, allegedly by men belonging to the Bajrang Dal, has become a big campaign issue. Chief Minister Pinarayi Vijayan has written to the Prime Minister. Rahul Gandhi has raised this issue, and Amit Shah says there will be strict action against the guilty. Here's the report. दोनों बहने नहीं है चलो भैया चलो कि मुझे अच्छे से करना है इसलिए क्या नाम है आपका 2 nuns and 2 young trainees from Kerala-based Sacred Heart Church travelling to Odisha earlier this month when they were allegedly harassed by some Bajrang Dal men on their train as it reached Jhansi in Uttar Pradesh on the 19th of March. The locals alleged that the nuns were taking away the 2 trainees to forcibly convert them to Christianity. क्रिश्चियन लिखा बेटा आपके इसमें क्रिश्चियन लिखा है ना ये करना इसकी फोटो खींचो और कौन लोग और भी ना आपके In this video accessed, some men are seen interrogating the group and forcing them to show their Aadhaar cards and other identity proof. झूठ बोल रही है पकड़िए आपने अलग-अलग कितना आप अपना आई कार्ड इनको क्यों ले जा रही हैं क्रिश्चियन बनेंगे नहीं क्रिश्चियन में पहले से धर्म परिवर्तन कराना है मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसे The nuns were forced to get off the train at Jhansi and were briefly detained and questioned by railway police after locals lodged a complaint. दोनों युवतियां बाई बर्थ ही क्रिश्चियन थी उनको किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था ये केवल उनको एक शक था जिसका निराकरण किया गया और इसके बाद मामले को शॉर्ट आउट करके संबंधित दोनों युवतियों को और दोनों नन को अपने गंतव्य के लिए राउरकेला उड़ीसा रवाना किया गया झूठ बोल रही है The incident has exploded on Battlefield, Kerala. आप अपना आई कार्ड इनको क्यों ले जा रही हैं क्रिश्चियन बनेंगे Congress MP Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi say the attack was a result of vicious propaganda run by the Sangh Parivar. The news of the nuns from Kerala being harassed in Uttar Pradesh, a BJP-ruled state, has also echoed on the campaign trail in the poll-bound state. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has urged the centre to take action, saying such incidents tarnish the image of the nation. Former Kerala Chief Minister Oomen Chandy has also slammed the centre over the incident. We want to take strong action, but the government is not taking any action. So in Kerala there is a strong protest against this attack on the nuns in North Indian states. After the BJP itself also took up the issue, in a state which comprises 18% Christian population, Home Minister Amit Shah promised strong action against the guilty. Local police have lodged a case against members of the ABVP. झांसी में 2 कॉन्वेंट की नन्स को एक अटैक या इंटॉलरेंस की एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद में बीजेपी लीडर्स और केरला चीफ मिनिस्टर ने आपको एक लेटर भी भेज दिया है उसमें तो आपका रिस्पांस क्या होगा नहीं मैंने आज कहा है मेरी सार्वजनिक सभा में जिसने भी एक घृणास्पद काम किया है उसको जरूर कानून के दायरे में लाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा The investigation currently continues. With Gopi Krishnan Unithan in Kerala, Bureau Report, India Today. With just days to go for the polls in Kerala, campaigning has picked up pace.
So we travelled all the way to the cultural capital of the state to witness how the high-profile fight is panning out. Thrissur, right in the middle of Kerala, is regarded as the cultural capital of the state. A city dotted with famous temples, Thrissur is where the elephant spectacle takes place on the day of Puram towards the last week of April. But with just days to go for voting, it's politics that's taking center stage over preparations for the temple festival. Both the Left Democratic Front and the United Democratic Front are fighting for prestige here. The CPM to retain a seat it won after over 30 years, the Congress to regain what has been its stronghold. The CPM won the seat in 2016 when VS Sunil Kumar emerged victorious. Sunil Kumar was rewarded with the agriculture portfolio in the Pinarayi Vijayan government. But this time, the CPM has left the seat to its CPI ally, which has fielded P. Balachandran. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ UDFന്റെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം സഹ VS സുനിൽകുമാർ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഈ സീറ്റ് LDFന് നേടിത്തന്നു 100% LDF ഈ മണ്ഡലം വിജയിക്കും കൈയടക്കും. We are giving a very best service for from the public sector hospital in Kerala. Yes. And our schools, government schools, you know, it's an international standard. We are making it as international schools. How can they vote for BJP? This is not UP. This is Kerala. They are well educated. The UDF has once again given the ticket to former Congress Chief Minister K. Karunakaran's daughter Padmaja Venugopal. A Congress General Secretary and Padmaja had ended up second in the 2016 battle. I am asking vote for development because I am coming from that family which done so much of developments in Kerala. But last 5 years there is nothing. The minister was not here last 1 year. He is in Cochin. He is in charge of Corona. He is in Cochin only. The BJP candidate is Suresh Gopi, the popular Malayalam film actor. A Rajya Sabha member, Gopi, according to reports, is not too happy about contesting the assembly election. Gopi has been undergoing treatment for pneumonia at a private hospital. Well, it is a tight fight that is going on in this constituency between both the LDF as well as the UDF candidate, because both of them are focusing on just one issue, that is development. However, even though the BJP candidate is not to be seen on the field, everything and anything is possible during an election. With video journalist Madhuwar, Nolan Pinto for India Today. Well, details of that report and much more is always up on our website. That's indiatoday.in. You can also download the app. State of War will be back tomorrow at 7. That's it from me for the moment. Boria Majumdar with Babu Moshai on the other side of this break. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.